Good morning, children, all of you, once again. Good morning. Okay. What all we have discussed yesterday? कल हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे? Does anybody remember? कुछ याद है? हम लोग यूजफुल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे. What are the useful aspects of microorganism? Isn't it? यही पढ़े थे ना कल हम लोग? Yes. Yes, Okay. ma'am. In that we have seen, first of all, this chapter, microorganism. Just a quick look. We have studied about microbiology, types of microorganism. Viruses are unique. How are they unique? Why they are in between the borderline of living and non-living? These are very common questions of this chapter. Then where do microorganisms live? Recording in progress. Then role of microorganisms in our life and the uses, how we are using this microorganism and how they behave as our friend. This we have discussed today. Yesterday, that was information of curd and cheese, fermentation process in bakery, alcoholic beverages, then sewage treatment, and how it is important to health, importance in health, immunity through vaccination, microorganisms, its usefulness in agriculture, use in energy and fuel production, and cleaning the environment. Now, all the topic I have said, children, about the uses. Has anybody any confusion in any of the topic? No, ma'am. मैम बोलिए. मैम एक हाइपरथर्मोफिलिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मैम. उसका डू यू नो में लिखा हुआ है कि वो 18 डिग्री से 122 डिग्री रह सकता है, पर मैम उसके आगे माइनस लगा हुआ है कि 2 लगा हुआ है. उसको तुम 2 भी मान सकते हो, 2 ही मानो. हाइपरथर्मोफिल्स है ना मैम. माइनस होता तो वो ब्रैकेट में होता. नहीं, माइनस नहीं होगा. इट इज 82 है वो 122. इट इज 82. दैट इज द रेंज. क्या लाग लग रहे क्या? नाउ प्लीज डोंट मेक नॉइज एंड डोंट टॉक इन channel. Recording in. Ankit, please don't talk. It is 2 because it is hyperthermal. Hyper means what? Extreme condition. तो 80 से माइनस नहीं मानो, उसको 2 मानो. 122 डिग्री सेंटीग्रेड. और कोई क्वेश्चन? Any more question? Why does the milk? Good morning, ma'am. Yes, good morning. Why does the milk taste sweet? Milk tastes Because sweet of, because of the presence of sugar called lactose. lactose. Lactobacillus converts this lactose into lactic acid. Yes. So whenever this question I am repeating in the class, because this is a common question that what is the acid prepared in the curd? So that will be your lactic acid. Okay. Effluent and bioaugmentation, fermentation, all of you are understanding? Yes, ma'am. Okay. Yes. So let's come to the next topic that we will discuss today. Microorganism, the food.
Now let us discuss that topic, that how these microorganisms cause disease or how they are acting as foes. First of all, a term is there, pathogen. Pathogen किसको बोलते हैं? The disease causing microorganisms, they are known as pathogens. Then are you familiar with the word toxin? Toxin से आप लोग familiar हैं? Yes or no? Yes, ma'am. क्या होता है? Toxin क्या होता है? Poison. Yes, that is a poisonous substance, and whenever these microorganisms enter in our body, then they multiply and they generate or release harmful material which are toxic to our body. Then these toxins adversely affect our body and we suffer from diseases. Some of the diseases are communicable diseases, some are non-communicable, but we will here see the name of some communicable diseases which are caused by microorganism. ऐसे हम लोग disease के बारे में, deficiency diseases are also there, non-communicable diseases are also there. But here we are talking about microorganism, so we will see that which microorganism can cause which type of disease. Like the disease which is spread through air, water, food, physical contact, or you can say insects, they are known as communicable diseases. Like there are several examples given and name of the diseases are also there. Tuberculosis and pneumonia, in which patients sneeze and cough, and small droplets can carry germs and it can be, which can be released in the air. Then these germs, if they are inhaled, they affect the healthy person. Then if we are consuming contaminated food, contaminated means affected food, those which are having some infection of germs, those type of food if we are taking, जो fresh नहीं है, जिसमें germs आ सकता है due to temperature, due to unhealthy environment, due to mishandling, so they can cause generally cholera, typhoid or hepatitis. Then the insect-borne diseases that are spread are through female Anopheles mosquito, and that is known as malaria. Then dengue by Aedes mosquito and plague by rat flea. These names you have to learn, children, because in the exam the question is asked about the names of the diseases or the causal organism. कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये important है. Diseases like common cold and conjunctivitis can spread through direct or indirect contact with the patient. Now, do you understand conjunctivitis? किस पार्ट में होता है? बॉडी के किस पार्ट में? आईज में होता है. और अभी आप देख रहे हो आईज में एक वायरल डिजीज भी हो रहा है जो इफेक्ट ऑफ कोविड है, दैट इज ब्लैक फंगस, जो इफेक्ट कर रहा है. तो ये कंजंक्टिवाइटिस का फॉर्म थोड़ा माइल्ड है इन कंपैरिजन विद दिस ब्लैक फंगस. ब्लैक फंगस में इट इज वेरी सीवियर. तो अभी तक हम लोग उसके बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाए हैं, but we are seeing that the patient who are severely affected with COVID, they can get affected in future with this disease also. ये disease से भी effect हो सकता है. Then here are some of the informations given about common human diseases and how they are getting transmitted. First of all, the category is divided. Bacterial disease है कि viral disease है कि fungal है कि protozoan है. What you have to do? You have to learn this chart. ये chart आपको सबको learn करना है, because in this whole chapter the disease name is given according to the category and it is mentioned in which type of organism, which type of disease is
caused और what is the causal organism. इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में. तो बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, कॉलेरा, टेटनस एंड टाइफॉइड. वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स. फंगी, रिंगवर्म, एथलीट फूट and protozoan, malaria, amoebic dysentery and sleeping sickness. These are the disease which are caused in infection of different organisms, microorganisms. Then how they transmit? एथलीट्स फूड का क्या होता है? Athletes food में बेटा जो एथलीट्स फूड कौन सा चीज है? मार दे यार, एक बारी मार दे, पर मुझे जाने दे. वो निशांत कुमार, ये तो ये टूटेगा कैसे? निशांत कुमार, you are in the class. Nishant Kumar, you are in the class and don't discuss other things. हाँ, जो आप पूछ रहे हो एथलीट्स फूड के बारे में, तो आप देखते होंगे एथलीट्स वियर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शूज, और वो शूज जो होता है उसमें हैवी स्पाइक्स होता है और वो हैवी शूज होता है. तो उन लोग को बहुत देर प्रैक्टिस के लिए या स्पोर्ट्स के लिए दे हैव टू वियर दैट टाइप ऑफ शूज टू हैव अ बेटर ग्रिप. तो उसमें कुछ मॉइस्चर अगर आपके पैर में रह जाता है या पसीना, जिसको स्वेटिंग ज्यादा होता है, तो वो लोग इस तरह का डिजीज से सफर करते हैं. उनके फिंगर्स और उनके जो जहां पर वाटर होल्ड कर सकता है, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट बढ़ सकता है, वहां पर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. और वो स्किन के मतलब फिंगर्स के इन बिटवीन वो एक वुंड टाइप का कॉज करता है, और दैट इज योर फंगल इन्फेक्शन. वो एक फंगल इन्फेक्शन जो ज्यादातर एथलीट्स के पैर में होता है, जिसको इस तरह के शूज से या मींस मॉइस्चर ज्यादा उसके पैर में होता है, तो ये प्रॉब्लम अराइज करता है एथलीट्स. देन इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Then after that, mode of transmission. How is it transmitted? कौन airborne disease है, कौन waterborne disease है, कौन soil से होता है, कौन animal से होता है, ये भी कैटेगरी आपको याद रखना है. तो actions like sneezing and coughing, which is transmitted through air, like it is transmitted in disease named as tuberculosis, common cold, influenza and swine flu. Then water, using contaminated water, it is typhoid, amoebic dysentery and cholera. These are waterborne disease. अगर गंदा पानी हम पीते हैं, infected पानी पीते हैं, इसीलिए हम लोग वाटर को हमेशा फिल्टर करना चाहिए. अगर आपके घर में फिल्टर नहीं भी है, तो you can boil the water in that 100-degree temperature. The germs are getting killed, and then you can filter it, and then you can, with the help of a muslin cloth or strainer, उससे आप filter करो, और then you can take that water. Then soil से tetanus means जो हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लो rusted things से अगर कोई hurt हो गया या उससे कोई wound हो गया, तो आपको तुरंत ही टेटबैक का इंजेक्शन लेना चाहिए. तो वो सॉइल के थ्रू ट्रांसफर होता है, और या थ्रू स्टेट मटेरियल विच आर देयर इन द सॉइल. और मैम, हाँ बोलिए. अगर टेटनस का सुई नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो आपको ये डिजीज होगा जिसमें टेटनस एक ड्रेडफुल डिजीज हो जाता है. अगर आप इट इज नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है इन्फेक्शन, अगर उसका जो पॉल्यूशन लेवल होगा, जो जितना उसमें जर्म्स हो सकता है, अगर उससे वो कम इफेक्टेड पार्ट से अगर आपका वुंड हुआ तो नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर रस्टेड चीज से कभी भी हर्ट करना है या हर्ट हो जाता है या चोट लग जाती है, तो आपको
आपको उसको जरूर हटा देना चाहिए, जरूर आपको टेटनस की सुई लेनी चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी टू टेक टेटनस इंजेक्शन, क्योंकि वो ओके मैम। एक तरह का पूरे बॉडी को टॉक्सिक, पूरे बॉडी में टॉक्सिन को स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरह का अगर कोई हादसा हो तो सबसे पहले टेटनस की का इंजेक्शन लेना चाहिए। इसकी वजह मैम वीक भी कर देता है ना? वीक तो करेगा बेटा, वो तो आप बीमार होइएगा तो वीक हो ही जाएगा। सबसे पहले ये हैम्पर करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट कर देता है और वो ड्रेडफुल भी हो जाता है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। एनिमल्स के थ्रू, जैसे कि अगर डॉग बाइट किया तो उसके थ्रू सबसे पहले तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि देखना चाहिए कि अगर वो डॉग को जो बाइट किया है वो पागल तो नहीं हो गया है, तो वो कौन सा ये जर्म्स उसके अंदर होता है, रेबीज डिजीज वो फैलाता है, और वो अगर बाइट कर लिया तो उसके लिए आपको इंजेक्शन उसको हटाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को इंजेक्शन लेना चाहिए। देन द मॉस्किटो इज ऑल्सो अ वेक्टर। मॉस्किटो भी एक तरह का वेक्टर है। वेक्टर मीन्स कैरियर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कैरियर। ठीक है, देन आफ्टर दैट it is said that prevention is better than cure। ये कहा गया है ना, prevention is better than cure। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी बात को पहले से प्रिवेंट करें तो बचाव करें तो हमको इलाज की जरूरत नहीं होगी, क्योर की जरूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या प्रिवेंशन हम लोग ले सकते हैं? मेथड्स टू प्रिवेंट फॉर प्रिवेंशन आर वैक्सीनेशन। Vaccination is for tuberculosis, polio, mumps, tetanus. Then using mosquito net and mosquito repellent, controlling mosquito population, and that is for malaria and dengue. Proper disposal of waste during disinfected water means अगर आपका जहां भी आप रह रहे हो, जहां जिस तरह का environment में भी आप रह रहे हो, but you should have clean water, disinfected water, so that you will not have this waterborne disease, that is cholera. Maintaining good personal hygiene is also a very very important thing. Hygiene maintain karna, like children at your age group, they lag behind in cleaning their body, and that is very very essential। क्योंकि अगर आप देखोगे कि समर सीजन में if your body is not clean, if it is not dry, then due to that moisture in your body, sometimes your close parts will get affected, like armpit, like the inner internal organ, that will get affected, and that will have some or the other problem like wound and different types of rashes and all। So आपको उसको clean और dry करना पर्सनल हाइजीन में आता है। एंड यू शुड वॉश योर क्लोथ्स प्रॉपरली एंड टेक बाथ एंड हैव टेक केयर ऑफ द क्लीनलीनेस। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डिजीज रिंगवर्म एंड एथलीट फुट। ये रिंगवर्म आपको इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा नहीं इफेक्ट करता है, जहां मॉइस्चर रह जाता है बॉडी में। सो दैट इज व्हाई वी शुड ड्राई आवर बॉडी आफ्टर टेकिंग बाथ एंड अप्लाई प्रॉपर you can say deodorants or proper powders, so that our body is dry. This is very important, children. You all don't take care at this stage, so that is very necessary. Then microorganism causing disease in animals. Animals में कौन-कौन सा disease होता है? Animals में होता है anthrax, foot and mouth disease. The anthrax is bacterial and it is caused in cattle. Foot and mouth disease is viral. It is also found in cattle. Foot और mouth disease बहुत ही painful होता है cattle के लिए। ये जो उसका hooves होता है ना, उसके जो पैर के ये lower part पे, उसके
कॉर्नर उसके मिडिल पार्ट में ये एक वुंड हो जाता है, जो कि उसके कारण एनिमल्स कैनॉट स्टैंड प्रॉपरली, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है और वो स्प्रेडेबल होता है डिफरेंट पार्ट में। अगर एक पैर इफेक्टेड हो गया तो वो दूसरे पैर में भी हो जाएगा, और इट कैन गो टू द माउथ ऑल्सो। तो ये बहुत ही ये है spreading disease है. Then rabies, which is a viral disease and it is caused by रेबीज एनिमल जो इफेक्टेड होते हैं, डॉग्स और मंकीज इफेक्टेड होते हैं, और इसी के कारण ये अगर डॉग्स और मंकीज काटते हैं, बाइट करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग को, तो ये रेबीज का जर्म्स ह्यूमन बॉडी में आ जाता है. Tuberculosis is caused by bacteria which is there in cattle and poultry also. Ringworm, fungal है जो cattle और poultry में होता है. Poultry, you understand children? Poultry समझते हो? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है poultry? Hence, Poultry क्या होता है? बोलो. Farm animals. Ma'am, farm animal. Ma'am, farm animal. Birds are known as poultry. Cattle में जो milk giving animals are known as cattle. ठीक है? Cow, buffalo, they are known as cattle. लेकिन poultry is related to birds. जो हम लोग पालते हैं या जो भी है, poultry is related with bird. Aspergillosis is a fungal disease which happens in poultry. Canine distemper is a viral disease which is caused in dogs. Clear? So, today we will we have studied only about the animal diseases. Plant diseases के बारे में हम लोग कल discuss करेंगे. Tomorrow we will discuss. And one of you please read it. अगर कोई point छूटा होगा तो we will discuss once again. Although it is in a chart form. कोई बच्चे एक रीड करो. Microorganisms. The foes. microorganisms The microorganisms are harmful in different ways. They cause diseases in some human beings, plants, and animals. Such disease-causing organisms are known as pathogens. Some organisms also cause the spoilage of food. Some grows on leather and clothes and have an adverse effect on their quality. Bacteria also grow on food particles that may get lodged in between our teeth. Acids produced by these bacteria corrodes the tooth enamel and causes cavities. Many organisms grow in water bodies and decreases their oxygen level. This is harmful to the other organisms living in these water bodies. Microorganisms causing diseases in human. During our lifetime, we come in contact with many microorganisms. Some of these microorganisms leave undesirable effect on our body. They invade our body and multiply inside it. They releases some harmful materials called toxins in our body. These toxins adversely affect our body and can make us suffer from diseases. Diseases which can spread from an infected person to a healthy person are called communicable diseases. Communicable diseases spread from one person to another through air, water, food, physical contact, or insects. In diseases like tuberculosis, pneumonia, when a patient sneezes or coughs, small droplets carrying germs are released in the air. These germs, if inhaled, can infect a healthy person. The consumption of contaminant food can result in diseases like cholera, typhoid, and hepatitis. The different types of insects can also spread to virus. हेपेटाइटिस बोला जाता है बेटा. Yes, ma'am. Hepatitis. Different types of insects can also spread various diseases. For example, malaria is spread by female Anopheles mosquito, dengue by Aedes mosquito, and plague by rat flea. Diseases like common cold, conjunctivitis can spread through direct or indirect contact with a patient.
Given below is information about some common human diseases and the way they get transmitted. Infectious diseases caused by microorganism, bacteria, diseases caused, tubular causes, diphtheria, cholera, tetanus, typhoid, viruses, common cold, influenza, mumps, polio, chickenpox, AIDS, fungi, ringworm, protozoans, malaria, amoebic dysentery, sleeping sickness, modes of transmission of pathogens, modes of transmission, air, action like sneezing, coughing, related diseases, tuberculosis, common cold, influenza, swine flu, water using contaminated water, typhoid, amoebic dysentery, cholera, soil consuming food items that are Cholera. not washed, cleaned properly, wounds, tetanus, animals, direct contact, being bitten by a rabid dog through vector that spread diseases, rabies and malarias, prevention of diseases. Various ways that can help in preventing diseases are given in the following table. Method of prevention, vaccination, diseases that may be prevented, tuberculosis, polio, mumps, tetanus, using mosquito nets and mosquito repellents, controlling mosquito population, malaria, dengue, proper disposal of water using disinfected water, chlorella, maintaining good personal hygiene, ringworm and athlete's food. Microorganisms causing diseases in animals. Microorganisms also cause diseases in animals. You must have heard about rabies, a disease that affects animals like dogs, and foot and mouth disease that affects the cattle. Such disease may affect domestic animals. Pets and human beings may also get infected if they come in contact with the infected animals. The following table tells us about the some diseases caused by microorganisms in animals. Anthrax, bacteria, animal infected cattle, foot and mouth disease, virus, castle, rabies, virus, dogs and monkeys, tuberculosis, bacteria, cattle and poultry, ringworm, fungi, castle and poultry, aspergillosis, fungi, poultry, canine distemper, virus, dogs, Okay. हाँ ठीक है इतना ही रहने दीजिए so here till here I think you might have understood all the top points different points what we have discussed here. Ma'am, what is sleeping sickness? Sleeping sickness is better where the people either they don't have a proper sleep or they walk in the during the night time and they don't remember it. वो उसको याद भी नहीं रख पाते हैं. That is sleeping sickness. एक तो प्रॉपर उनको नींद नहीं आती है और सब किसी किसी को ये भी होता है कि they walk in their unconsciously in their while they are sleeping. तो ये इस तरह का प्रॉब्लम होता है due to protozoans. और ये आप लोग इसको लर्न करिएगा ठीक है all of you and the important points what I have taught today is pathogen का term याद करना है communicable diseases याद करना है definition and you have to know all the names of different types of diseases caused by different organism अलग-अलग organism से किस तरह से डिजीज होता है और उसका नाम क्या है वो याद रखना है and the chart which is given on page number 25 26 ये please learn कर लेना आप लोग and any problem you are having in any of the topic related कोई भी टॉपिक जो रिलेटेड है उससे आपको कोई दिक्कत है कहीं पर भी then you can ask me. And are you all writing your question answer or not? ऐसा तो नहीं है आप लोग उसको Yes, छोड़ ma'am. कर जा रहे हो? मैम ma'am. लिख रहे हैं नो मैम Please do it मैम लिख रहे हैं regularly. हाँ आप लोग इसको रेगुलरली करो
अदरवाइज आपका बैकलॉग हो जाएगा और आपको एक बार उसको सम अप करने में नहीं बनेगा. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट इट, कीप ऑन राइटिंग. And why the students are not participating in the class? Is there any genuine reason? Class 8E and 8F? Or you are not getting what I am teaching? कोई दिक्कत है क्लास में? क्लास में आओगे तब ना समझोगे. So tell your friends also, those who are not coming, not joining, and you should join your class regularly. कोई प्रॉब्लम है जो डिस्कस करना है अभी इस क्लास में? Anything related to it? Who is raising the hand? बोलो आके. You just tell if you have any question. Are viruses made up of cells? Pardon? Ma'am, are viruses made up of cells? नेचुरली अगर वो लिविंग है तो ये तो आप समझ ही लो कि वो बिना सेल का कोई लिविंग कंपोनेंट नहीं हो सकता है. तो वो सेल है लेकिन वो एक्टिवेट होता है किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाने से और ऐसे वो डीएक्टिवेटेड रहता है और वो नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. ठीक है, लेकिन सेल तो होगा ही, बिना सेल का कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है. Clear? Yes. Cell or nucleus, it is necessary. बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है because it is the smallest unit of life. लाइफ वहीं से ओरिजिनेट करता है. क्लियर? और कुछ? एक्सक्यूज मी मैम. बोलिए. यस सर, जो ब्रेड होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, तो उसके ऊपर फंगी कैसे निकल आता है इतना दिन तक अगर हम लोग उसे रख दिए तो? हाँ, जब वो क्या है, एक तरह से आपका शुगर पार्टिकल्स भी है उसमें, तो वो एक तरह से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. उसका जर्म्स जब एप्रोप्रिएट टेम्परेचर और एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन मिलता है उस ब्रेड पर, उसको फूड मिला, आपको मॉइस्ट कंडीशन है तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिला, तो वो उसके लिए एप्रोप्रिएट कंडीशन होता है फॉर इट्स ग्रोथ, तो वो उस पर ग्रो कर जाता है. क्लियर? ओके मैम. कोई भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर ये बहुत जरूरी है. आप देखते होंगे कि आप रेनी सीजन में अपना शूज पॉलिश करके भी रखोगे ना, और अगर वो डार्क सरफेस पर है जहां पर उसको थोड़ा ह्यूमिडिटी मिल रहा है तो उस पर एक लेयर ऑफ व्हाइट कोटिंग आ जाएगा. तो वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोल्ड. ठीक है, वो फंगी का ही एक फॉर्म है. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म. यस मैम. ठीक है, ओके. और किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है? एनीबडी वांट्स टू डिस्कस इन द क्लास? ओके, देन थैंक यू ऑल ऑफ यू. और जो जो पॉइंट हम आपको बताए हैं इस चैप्टर में उसको जरूर लर्न करना. लर्न इट एंड रीड द चैप्टर बहुत ही ध्यान से रीड करोगे एंड लर्न ऑल द समरी चार्ट ऑफ डिजीजेस एंड दैट प्रिवेंशंस आल्सो. क्लियर? थैंक यू. थैंक यू मैम. मैम.